we are going to start the next part, that is the duct are associated with the male reproductive system that finally secrete their secretions into the vas deferens. जो अपनी सारी secretions हैं vas deferens को secrete करती है. Kindly switch on your mics temporarily, and the vas deferens going to receive the duct from different glands. Now the different glands which are associated, which are present in the male reproductive system, that includes the number one is the seminal vesicle. This is the seminal vesicle, the vas deferens which is coming above the urinary bladder and then loop it back. The seminal vesicle then secrete their secretion into the vas deferens, and the common duct thus formed by the fusion of the vas deferens. दो vas deferens आई, दोनों vas deferens जो है आपके seminal vesicle भी दो है, दोनों seminal vesicle आए and both seminal vesicle and vas deferens, ठीक है, ये चार ducts fuse करके एक ejaculatory duct बन जाएगी. So ejaculatory duct is then formed, then ejaculatory duct then fuses with the urethra. This is the urethra coming from the urinary bladder. Urinary bladder से urethra आ गया. The point where they get fused, जहाँ पे ये दोनों आपस में fuse होते हैं, this section is also covered by a gland. This gland is known as the prostate gland. इस gland को हम prostate gland कहते हैं. Okay, so this gland is prostate gland. Getting the point? Now, Yes, sir. after coming out from the prostate, the urethra receives the bulbourethral gland secretion. जो bulbourethral की gland की secretion है, finally it receives the urethra and enters the penis part, where then finally releases the sperm outside. Clear? Semen, that is the mixture of the sperms and the secretion of the glands. जो glands की secretion है और जो sperm है वो mix होके semen बन जाएगा and then released outside. Getting the point? Yes, sir. Very good. Now we are going to start the writing part. Clear? The glands which are associated. हेडिंग क्या डालें? Continuity में लिखेंगे अभी. Vas deferens हमने लिखा था last words, that is the vas deferens receives the duct from the different glands. Today I have switch on with the full mode. So vas deferens receives the duct from the different glands. जो vas deferens है वो different glands से आपके receive करता है. So जो different glands है, what are these different glands? Okay, so let's have a look. These different glands, the different glands which are associated with the male reproductive system includes number one, a pair of seminal vesicle. Okay. Second, a prostate or a prostate gland. Then a pair of, that is two, bulbourethral glands. Okay. Now, seminal vesicle. Seminal vesicle लिखते जाइए.
सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशन है, दे सिक्रीट 2/3 वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। सीमेन का 2/3 वॉल्यूम सीमेन होता है। इट द फ्लूइड, viscous fluid contains fructose, prostaglandins, and clotting proteins, different components. Fructose is the major component that is serving as a nutrient. Nutrient का काम करता है. Okay. The another one is the prostate. Prostate क्या secrete करता है? Prostate gland secretes the secretion contains citric acid, that is also one of the component of the sperm nutrient. A number of enzymes, like acid phosphatase, amylase, pepsinogen, and again prostaglandins. The last one is the bulbourethral glands, also known as the Copper's gland. Very important from the competition point of view. Copper's gland. They secrete a clear, viscous mucus which is lubricating, in function. The alkaline fluid secreted by them neutralizes acid from the urine. Present in the urethra. जो यूरेथ्रा में यूरिन प्रेजेंट होता है, उसमें जितना भी एसिडिक कंटेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो हाँ जी, कोई डाउट, कोई क्वेरी? वास डिफरेंस, हाँ जी, क्या रह गया?
I'll forward this video. आज मेल रिप्रोडक्टर सिस्टम की वीडियो आपको फॉरवर्ड कर देंगे. ओके. Yes, sir. Done. Okay. So vas deferens receives the duct from the which of the mic seminal vesicle and the common duct formed by the union of them is known as ejaculatory duct. Ejaculatory duct. This duct pours the and transport stores and transport the sperms from the testes to outside the through urethra. टेम्परेरी स्टोर करता है जिससे जो स्पर्म को बाहर जाना है वो यहाँ पे थोड़ा सी देर के लिए स्टे करेगा, राइट. The urethra originates from the urethra के बारे में भी थोड़ा लिख लीजिए. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. So the external opening of the urethra is called urethral meatus. Underline it. Okay. Now the next is the penis. The penis is the male external genitalia it is made up of special tissue that helps in erection of the penis.
facilitate the insemination enlarged end of the penis called the glans penis, which is covered by the loose fold of skin called prepuce or foreskin. Prepuce or foreskin. Okay. So this is all about the पेनिस. अब ये जो इरेक्शन होता है वो कैसे होता है इसके अंदर, द इरेक्शन का कंसेप्ट अगर देखते हैं, सो इरेक्शन इज मेड बाय द हेल्प ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, उनका इंटीग्रेशन होता है. द इरेक्शन ऑफ द पेनिस इज डन, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं the erection of the penis is due to the prevention of the blood flow back to the veins. ब्लड वापस लेके जाती हैं, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है बहुत ज्यादा, एंड द स्पॉन्जी टिश्यू बिकम्स इरेक्ट. ठीक है, जैसे किसी पाइप में हवा वो पानी भर दिया है एंड इट गेट वेरी हार्ड. एंड बैक टू द वेन्स, दिस लीड्स टू द of the tissue present in the penis. This is regulated by the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system इसको रेगुलेट करता है. दो तरह का सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो उसके बाद शूट करना, दैट इज इरेक्शन हो गया, एंड देन फाइनली passing on the semen to the female body or outside, that needs also the muscular movements. तो muscular movements की requirement रहती है. From here continuously muscular movement चलेगा, that is from the hair and to here, क्योंकि यहाँ तक तो आपका आ ही चुका है सीमेन, इजैकुलेटरी डक्ट तक तो, राइट. अब बस सेमिनल वेसिकल से लिक्विड आएगा, राइट, सेमिनल वेसिकल से लिक्विड आएगा, प्रोस्टेट से लिक्विड आएगा, ये बल्बोयूरेथ्रल वाला लिक्विड आएगा. तो देन इमीडिएटली क्या होगा कि यहाँ से मस्कुलर मूवमेंट शुरू होगा एंड यूरेथ्रा टेम्परेरीली यूरिनरी ब्लैडर से ब्लॉक कर दिया जाएगा, और ये धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते देन फोर्सफुली इजेक्टेड आउट. क्लियर, फिर फोर्सफुली इजेक्टेड आउट थ्रू द पीनस. क्लियर हुआ? सो नाउ आपका ये वाला डायग्राम जो है
आज इसको हम फुलफिल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम। ओके ओके ओके, सो ये वैसे आपको सारा समझ आया नहीं आया? आ गया सर। क्लियर है सर, ये सारे क्लियर है। फिर सर इसके डिसऑर्डर भी तो होते आएंगे। डिसऑर्डर जब आएगा, डिसऑर्डर की बात तब करेंगे। डिसऑर्डर अभी फिलहाल कोई नहीं है, ठीक है। इतना सारा हम सिलेबस करने बैठेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम निकलेगा। मैं थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करा रहा, है ना, जितना हमारे को अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो फिर हम ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर को। और हर चैप्टर ऐसे इंटरेस्टिंग है, 12th में तो चैप्टर ही सारे इंटरेस्टिंग है। डन सर। डन। यस सर। नाउ inserting the drawing canvas. Okay. This is the diagram showing the sectional view of the side view of the male reproductive system. So starting with the testis. So this is the testis located in the scrotum. Just okay, right, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Now the epididymis region that is surrounding the posterior part. From the epididymis there arises a vas deferens. Okay, so this vas deferens then move over the urinary bladder. Try to draw very smoothly the fine vas deferens, right, that is going to receive इसमें दिक्कत आई है। Okay, so it is going to receive the secretion from the seminal vesicle. So this one is the seminal vesicles। साथ साथ बनाते जाइए बेटे, वीडियो बना रहे हैं। This is the we can draw
urethra with red. This is urinary bladder. Okay, and the urethra that is coming out fuses with the ejaculatory duct. This is the ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Now the prostate gland is present over here. Prostate gland we can show with the blue color, right? This is the prostate gland that is present, just making the fine color. So this is the prostate gland which is present at the junction of the urethra and the ejaculatory duct, right? So this is the fine prostate gland. So I have to draw to this side. This is the prostate gland. Okay, now again back the fine tube, then comes urethra, coming out, enters the penis segment. Okay, right? The outer covering on the penis, the tip of the penis is slightly swollen. That is called the glans penis. And the glans penis have the opening. That opening is called the prepuce. Oh, sorry. That opening is called the urethral meatus, right? So you have to draw this diagram. This is the urethral meatus. Urethral meatus. This is what you call scrotum or scrotum sac. Scrotum. The orange color section is testis. This yellow color segment is epididymis or epididymis. Right? This epididymis then joins with the
vas deferens. Okay, this vas deferens, then move over the urinary bladder. This one is urinary bladder. Okay, and this one is the urethra, right? Okay, okay, have you drawn this? Yes, sir. Quite easy. This is the side view of the male reproductive system. This could be asked in 5 marks. Okay, now this next one is the whole male reproductive system with the testis. This is one testis and this is the second testis. Okay, right? From the testis there is a epididymis. Okay, इस तरह से लूप बनाते हुए दिखाएं. Similarly, from this side, this is the epididymis. Okay, this epididymis then form fusion with the vas deferens. This vas deferens just a minute. सर एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन. एक मिनट, चलिए स्टार्ट करें. It is very difficult to draw on this board. Yes, I have done it. सर पेन हाँ ले जी, सर आप बनाने वाले और पेन के क्या? साथ बना रहे हैं या माउस के साथ ही बना रहे हो? पेन के साथ. बेटे पर वहां पे दिख नहीं रहा ना, कुछ जलाना कहीं और है. यस सर. मतलब बन वहां पे रहा है, या तो उसी जगह पे बनाना होता ना.
में नहीं रहा था सर, है टैब टैब तो ये मेरा भी टच स्क्रीन ही है, बट ना उस या तो फिर वीडियो ऑन कर लो. द थिंग इज दिस, दिस इज बेटे माइक ऑफ करो वीरेंद्र. This is one ureter, this is the second ureter. Okay, that opens to the urinary bladder. Now they coil back around the ureter from behind and then comes down. Similarly, they loop back from the other side, vas deferens from behind, then coming okay here, the openings from the seminal vesicle. Seminal vesicle, we can draw it with a different color. There are two seminal vesicle for each side, one for each side. They also releases its content. Okay, and a duct is formed. Okay, so there is a duct, ejaculatory duct. This ejaculatory duct then fuses with the urethra. Okay, where it receives the secretion from the prostate gland. So this is the prostate gland. Okay, that continues coming out, and now after receiving from the prostate, it receives the secretion from the bulbourethral gland. So this is the bulbourethral gland after the prostate. Bulbourethral glands are present. This finally okay. Now the green color means India takla.
got hanged. Not operating. So ये वाला सेक्शन जो है ना पेनिस का बनेगा. यहाँ पे खराब हो गया. अच्छा पता चल रहा था. I don't know what happened. चलिए ये वाला आप बना लीजिएगा. एक्चुअली ये ऑपरेट नहीं हो रहा है यहाँ पे. ओके सर, आई एम डन. बना लिया सर. ये बाहर ही आ गया इसके. डायग्रामेटिक व्यू एनसीईआरटी में से देख के बना लीजिएगा. व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखिए नहीं चल रहा. इसका कुछ गड़बड़ हो गई है. सेंस करना बंद कर दिया इसे. ये भी इसके साथ साथ मूव कर रहा है. एनी हाउ बन जाएगा. आई थिंक सो. दैट नाउ द सेक्शन में लेबलिंग रहेगी थी. मेरी सारी लेबलिंग पड़ी है अभी. लेबलिंग भी कर लोगे? यस सर. हो गया सर. यस सर, कर लेंगे. ऑलमोस्ट तो सर हो ही गया. डन. एक मिनट में रीस्टार्ट करके देखता हूँ. सर एक मिनट देख लो सर. Now it is doing. Okay, now label this part. This is the glans penis. The foreskin. This is the foreskin. Yes. The foreskin or the prepuce. This is prostrate. The next one is the
testis. This is bulbourethral gland. Okay. The pair of seminal vesicle, right? The ejaculatory duct, ejaculatory duct that is fuses with the urethra, and this finally urethra that enters the penis, right? The part which is coming up is the vas deferens. This one is the epididymis or epididymis that stores the sperm, where the sperms get mature. Okay, and penis is having the spongy tissue. Let me draw with the a spongy tissue that is present in the penis around the urethra. Right, so urethra mellitus, the opening is called urethra mellitus. Meters. Okay, so this is all about the diagram. So I think so you are now able to understand the whole part. Clear? If still there is any doubt, any query, we can solve it. Are you comfortable with the English now? Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, sir. कोई सिंपल problem नहीं. कोई ज़्यादा नहीं थी.